Nice. She always tells me. I don't know who she is. अब ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा देखो. All right. Chale. I think now we can start. So, like yesterday, I was explaining some note points actually, like things that we get from intermolecular forces. तो उसमें मैंने कहा था कि काफी क्वेश्चन आते हैं, हमने पॉइंट्स लिख लिए थे, बट उसके हमने एग्जांपल्स नहीं की थी. तो उन्हीं पॉइंट्स के आगे you could actually add these examples. So it's like completing this intermolecular forces. एंड वो जो नोट पॉइंट्स हमने लिखे थे, ठीक है, ये एग्जांपल्स उस सब के लिए. तो first, after like you could write examples for that. Now it's like the boiling point graph of hydrogen halide. Boiling point graph of hydrogen halides. So it's like hydrogen halides are compounds of hydrogen with halogens. Yes, exactly. So if I list those compounds first, we have this HF, HCl, HBr, HI, and HAT. Now, if I'm supposed to draw a general sketch of these compounds boiling point, so y-axis it would be like boiling point, and x-axis we have this MR. We'll just sketch, we'll draw a general sketch, not exact values. But before we do that, we need to see what sort of intermolecular forces are present in these compounds, right? So this example is quite common. It comes in MCQs so many different ways. Dusra, you get this graph in MCQs and 4 graphs given, और उसमें से you have to pick the right one. तो हर तरह से आता है. अब before we decide all this, तो आप लोग जरा मुझे बताएं कि are these compounds polar? एक है polar है, बाकी सारे नॉन पोलर. एक दिन में नॉन पोलर हो गए. How about HCl? नहीं, सारे polar. So they're all polar, right? So उसको छोड़ो. Stay with me. Acha, all these are polar. So which intermolecular force is absent in these? TIDP, temporary induced dipole. That's for sure absent, right? Because that happens in non-polar, right? Now we are left with hydrogen bond and permanent dipole. So now we need to decide which one has hydrogen bond. Now you can tell your favorite HF. HF hydrogen bond and the rest permanent dipole, right? So this HF has hydrogen bond and the rest would have permanent dipole force. अब जो points मैंने लिखवाए थे कल, if you look at those points, तो उसमें लिखा है कि those compounds which have hydrogen bond, they have highest boiling points, right? So among these, the highest boiling point would be of HF, and then
for the rest because they have same intermolecular force, right? So अगर intermolecular force same है तो फिर we decide on the basis of MR. अब इन सब में से the highest MR is of HAT, right? Hydrogen acetatide. तो इसका MR highest है, इसका boiling point highest होगा, and HCl will be lowest because HCl's boiling point is low. So technically HF का boiling point with lowest MR will be highest, फिर lowest HCl, and then it would increase towards HAT, but HAT would be lower than HF, sort of V-shaped graph, right? तो इसको sketch कर देते हैं यहाँ पर. Let's say ये अगर HF है and it goes down for HCl and then it goes up for rest of the compounds. So this is HF, HCl, HBr, and HI and HAT. अच्छा, अब देखें पेपर में as I said कि you get 4 graphs at time in MCQs and you're asked to pick which is the right one. Yes, this one, hydrogen acetatide, just like AT, astatine. So it's like hydrogen chloride. We put IDE with everyone, so it's hydrogen acetatide. It comes in questions, HAT. Normally we don't use it as a compound. Theoretically it falls in the same place. इसको discussion question में जरूर आता है ये. So if you're given 4 graphs and you have to pick the right one, so it should look like this, right? And you will find 2 graphs very similar. So don't rush through the answer. In the wrong graph, HAT would be higher than HF. Okay, so it's not just the shape that you look for. So आपने ये भी देखना है कि वो ठीक हो. It could come for sketching even, ठीक है, लेकिन ये है कि अभी तक paper 2 में कभी आया नहीं है बना के दिखाने को. And then the other questions are like short MCQs question which say कि this graph is given in question और आपसे examiner कह देगा which of the following reasons explain why HF's boiling point is highest. तो फिर the reason you look for or option you look for would be the one which says HF has strong hydrogen bonds, or any sort of statement relating to hydrogen bond. And you would see that typically in such questions, the last option is correct. D. Controversial बात नहीं, मैं सही बात कह रहा हूँ, but don't make it as a fact. यार ऐसे question में जाके D पे tick कर दें. But you'll see this yourself, and the reason behind that is the examiner really wants you to read every statement and realize the last is correct. That takes time. I've been that person for some time. लेकिन examiners जो होते हैं ना, they're also experienced teachers and they know कि student की psychology क्या. और A level का exam MCQs especially is not just a test of your knowledge, it's test of your ability to see and decide कि question को solve कैसे करना है. तो अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, और ये सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूँ कि जिसमें आपको पता चल जाए कि ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, एंड इफ यू हैव अ गुड कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट विद ऑप्शन डी. और अगर वो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और डी ठीक है, तो डोंट रीड द रेस्ट 3. आई मीन दैट्स वेस्टेज ऑफ टाइम. अगर डी ठीक नहीं हो तो टिपिकली फिर ए ठीक होता है, बट अगेन डोंट मेक इट इज अ फैक्ट. नहीं, सही कह रहा हूँ. अभी आपको मैं वर्कशीट दूंगा, आई विल पॉइंट आउट सच क्वेश्चंस, और ये फिर बच्चे बाद में खुद भी ढूंढना शुरू हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है ये क्वेश्चन कैसा है. क्या हुआ? हाँ, ऑनलाइन नहीं. 11 o'clock और इंटरेस्टिंगली आप में से कोई भी नहीं आया उसमें. चलो, आपका आपके तो स्कूल का था तो बाकी लोग भी उधर थे ना. चले, वैसे तो वेस्टमिंस्टर वाले भी सारे बिजी थे, तो मुझे पता था इसलिए मैंने आप लोगों को रिमाइंड. लेकिन आप इस सैटरडे 11 o'clock आप लोग, क्योंकि उसमें हम लोग इनऑर्गेनिक करेंगे थोड़ा साइड बाय साइड,
थोड़ा syllabus this Saturday. It would be online actually. You can't attend? नहीं, just एग्जाम्स मैचेस हैं. अच्छा चलें, कोई नहीं. इनऑर्गेनिक कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आई शेयर द रिकॉर्डिंग फॉर दैट. वो तो जरूर करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे तो भी करेंगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस चाहिए, याद करना पड़ेगी. बट स्टिल विल सॉर्ट ऑफ हैव दैट क्लास, अदरवाइज आपका ये जो है ना खत्म नहीं होगा टाइमली, फिर सिलेबस बहुत ज्यादा है. अच्छा देखें, ये तो एक एग्जांपल होगी. उसके बाद अब ये तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना एक्स्ट्रा क्लास है, आ जाओ पढ़ लो. फिर जैसे मार्च आएगा तो आप लोगों को टेंशन शुरू हो जाएगी. फिर मैं आपसे कहूंगा टेंशन नहीं लेनी. बच्चे बड़ा कॉमन डायलॉग बोलते हैं, सर टेंशन ना लें. अभी से हो रही है. मैं सिर्फ टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई भी करनी. हो जाएगा, टेंशन नहीं. क्या होता है? ओ, 12 से पहले होती, 12 से पहले होती बाद में. बस फिर क्या टेंशन है यार. नहीं, 10-12 को आते, 12 को आते हैं बस. कोई नहीं, खैर है. अच्छा, अब ये एक एग्जांपल ट्राई करेंगे. Now this compound, as it was given in the question, it's like carboxylic acid, and it has p interaction points given. Carbon positive, oxygen negative. This interaction is given, and this oxygen is negative, hydrogen is positive here, and this interaction is given. So these dotted lines represent some intermolecular forces, right? And they were like numbered as this is 1, this is 2, and this is 3. 1, 2, 3. And the question, this is like structured paper question. You were supposed to name these interactions, like कौन सी intermolecular forces हैं ये. अच्छा, this example is for that point which in which I wrote के one compound could have all the intermolecular forces, right? सारी हो सकती हैं. ये वाला, ये खूबसूरती के लिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि इस रीजन में, इस एरिया की इसके साथ ये अट्रैक्शन. बट हमें इसका नाम बताना जो आपकी फेवरेट है. एवरी टाइम यू सी दैट फर्स्ट. Okay, let's start with this first, maybe. So what is the name of third interaction? That's hydrogen bond for sure, right? Because this hydrogen is actually attached with highly electronegative oxygen. So third is of course hydrogen bond. How about the second one, this one? That's actually between positive carbon here and negative oxygen. So here hydrogen. Her question का answer hydrogen bond. Do you see hydrogen in this? Between the two atoms, in hydrogen bond between the two atoms, one must be. वो नहीं है, but it's a polar bond, right? So it is like permanent dipole. And yes, because that's only left. That's non-polar side chain, non-polar area. So that's like TIDP. The first one is TIDP, temporary induced dipole. And this one is permanent dipole. In fact, in this example, I've kept all the three. So it was sort of an obvious question. But AS में or A level में you might come across such a question in which out of 3, 2 answers might be same even, right? तो अगर आप देखोगे option 1 भी hydrogen bond है, 2 भी hydrogen bond है, तो you should not be like ये कैसे हो सकता है कि ये सारा ही same आ रहा है. तो again, if your concept is good and you come across same answer repeatedly, just write it. ठीक है?
So this compound, like one compound having all the intermolecular forces present in it. And then the next one as an example, the C5H12 pentane. Now pentane C5H12 actually has two isomers. One is a straight chain, and the other one we could draw is as a branched. I'm not just, I'm just drawing the carbons here. हाइड्रोजन का हमें इतना फायदा नहीं है इसमें. All right, let's start with questions part. तो अब देखें C5H12, is it polar, non-polar? It's a hydrocarbon. All the hydrocarbons are non-polar. TITP का पेज निकालें. First example जो मैंने लिखा, all hydrocarbons non-polar. ठीक है? So it's non-polar. So if a non-polar compound is given, it will have TIDPs, right? Temper-induced dipole forces. But see, इसमें I've drawn C5H12 as a straight chain, 5 carbon in a straight chain, and this one is branched, right? So same intermolecular force, and these two are isomers. So isomers have same MR as well. So when the intermolecular force is same, MR is same, then we decide on the basis of surface area. The one which is straight chain has more point of contact with the other one, right? So they'll actually have more attractions compared to the one which is branched. तो ये example किस point के लिए कि straight chain hydrocarbon जो last मैंने लिखा था, straight chain hydrocarbons have higher boiling point than branched one, right? So if I'll just like that's straight chain and that is branched. So this one has higher boiling point. ये भी मेंशन कर सकते हैं कि पहले वाले में 4 बॉन्ड बनते हैं. इसमें नहीं. You don't need to. We don't know how many bonds are actually formed. ये तो मैंने बस. But it's very obvious कि जिसके अंदर branching है वो molecule बहुत पास नहीं आ सकते, right? जो straight chain है वो बहुत पास आ सकते हैं, and then they could have many points of interaction. So greater points of interaction for straight chain compared to branched, hence stronger intermolecular forces, and therefore higher boiling point. तो I mean ये तीन examples वो जो points मैंने लिखवाए थे आप लोग को उन पे typically apply होती हैं, और एक और एग्जांपल इसमें ऐड कर लेंगे बिकॉज गैसेस काफी ज्यादा आती हैं क्वेश्चंस में. Let's say if we had some gases given in the question such as HCl gas, hydrogen chloride, helium, ammonia, and neon, and if we were supposed to arrange these gases on the pattern of increasing boiling point, तो अब ये एग्जाम गैसेस वाली जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत एमसीक्यूज में आते हैं, और इसमें अगेन you'll get 4 options and it would say which option correctly represents the order of increasing boiling point of gases or decreasing boiling point, right? दो ही ऑप्शन हो सकते हैं. अब इसमें मैं नहीं कहता कि हमेशा ऑप्शन डी ठीक होगा, but maybe option D again.
But in all these questions, again, very quickly you need to decide which gas has highest boiling point and lowest, and you get the idea. You can actually single out two options. They'll be very same, और फिर उसके बाद आप correct वाला pick कर सकते हैं. तो आप लोग मुझे बताएं कि HCl में hydrogen chloride gas, what kind of intermolecular force will be present? TIDP नहीं हो सकता. हाँ, ये अच्छी approach है. Good. I mean, you can single out the forces. It is polar, so permanent dipole, right? It won't make hydrogen bond. It won't make TIDP, but permanent dipole. So this one has permanent dipole. And which one of the three has hydrogen bonding? Ammonia has hydrogen bonding, right? Helium and neon are noble gases and they're non-polar, right? So hydrogen bonding ammonia, and these two have TIDP. The strength of intermolecular forces is like hydrogen bonding is strongest, and then permanent dipole, फिर TIDP जो मैंने कल list किया था. So among these four gases, the one which will have highest boiling point should be ammonia, right? Increasing के हिसाब से लिखना है, ammonia would go at the end. इधर आ जाएगी. And then before TIDP ones will be having HCl because वो polar है. I mean, it is polar and it's obviously permanent dipole is much stronger than TIDP, obviously. फिर हमारे पास आ जाएगी HCl, or between two noble gases with same intermolecular force, how do we decide कि helium और neon में से किसका ज्यादा होगा? We'll decide on basis of MR, right? So helium is lightest in the group 8 and neon is heavier, so neon would come before helium, like after helium actually in this order. Neon and lowest will be नहीं, helium का काम है, neon का ज्यादा है, तो neon का boiling point ज्यादा होगा, helium से ज्यादा होगा. So the option which would have this order would be the one which is correct. So as I said, two options will always have helium and ammonia at the end. सिर्फ ये बीच में switch करेंगे तो option right होगा, ये गलत होगा. I hope ये चीज समझ आई आप लोगों को. So ये जो points आज हमने discuss किए हैं, note point से, intermolecular forces से, इनसे ज्यादा question आते हैं. And then at second place hydrogen bonding से question आते हैं. What's the higher area? Yes. No, neon's AR is greater than helium. So that's why its boiling point is higher, right? Increasing on that side. अच्छा, तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा, हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे. एक्चुअली ये तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही हम कंप्लीट किया 2 दिन में. द नेक्स्ट वन इज सिग्मा पाई बॉन्ड, तो वो कर लेते हैं और फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा रह जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक वी कैन कवर मोस्ट ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड राइट नाउ. तो नेक्स्ट टॉपिक की जो हेडिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बाद इट्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. जो पोलैरिटी के लिए वी पुट दिस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव साइन. तो सिग्मा के लिए वी यूज द सेम साइन हियर, दिस हाफ 8 काइंड ऑफ और डिस्टॉर्टेड एस. पाई का वही साइन है जो आप यूज करते हैं मैथ में. तो वी कॉल इट सिग्मा पाई बॉन्ड, बट जो सिलेबस है उसमें इस टॉपिक की जो हेडिंग है इट्स लाइक ऑर्बिटल अप्रोच टू कोवलेंट बॉन्ड. दैट्स व्हाट इट सेज. मुश्किल वाले. I mean, covalent compound की we have 3 types of diagrams. एक होती है डॉट क्रॉस डायग्राम जो आप बना रहे हैं ओ लेवल से, फिर होता है उसका स्ट्रक्चर्ड लाइन डायग्राम, एंड देन इज द ऑर्बिटल डायग्राम. ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम को वी कॉल सिग्मा पाई बॉन्ड्स. तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखने वाले, पहले मैं लिख लूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा.
इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन जो कैम्ब्रिज का स्कोप है ना उसके हिसाब से वी डोंट हैव दैट मच डिटेल इन आवर सिलेबस। उतना ही हम डेप्थ में जाएंगे। इसके कुछ पॉइंट्स पहले हम सिग्मा बॉन्ड पे लिख लेंगे। सिग्मा बॉन्ड, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is sigma bond, and it is formed by linear overlap of orbitals. Or the linear overlaps of orbitals, and there are three types. These are three linear overlaps, S P and Px and Px. अब इस कॉन्सेप्ट के लिए you should have some idea of orbitals, क्या orbitals are of S and P shape and everything, डम्बल shape और वो। तो ये तीन टाइप के linear overlaps हैं, SS, SP and PX and PX. And then one or two points for pi bond. Pi bond is, in fact, it's present in double or triple covalent bond. And it is formed by sidewise overlap of orbitals. Sidewise overlap. This is Py, and this is Pz and Pz. These are the two types of sidewise overlaps. तो यहाँ तक आप लोग लिख लें, फिर मैं एग्जांपल्स में ये सब एक्सप्लेन कर। ये जो डॉट क्रॉस डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम्स, वी डोंट काउंट देम एज डायग्राम एज सच. No, it's just the p orbital, and p orbital both lobes are of same size.
ऑलराइट, लिख लिया यहाँ तक। दिस इज एक्चुअली आफ्टर फॉर दीज टू, जो पॉइंट्स मैंने तो लिखे हैं वो इधर हैं, और क्वेश्चन में इस तरह आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे नहीं आज। चले अब देखें जरा बोर्ड पे, समझें इसको, बाकी फिर अब जो रह जाएगा आप उसको नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी डोंट गेट ड्राइंग ऑफ द ऑर्बिटल डायग्राम्स एज सच, लेकिन छोटी छोटी एग्जांपल्स आती रहती हैं। सो a covalent bond, you know, a covalent bond is single bond, a double bond and a triple covalent bond, right? तो अगर आप इसको सिग्मा पाई की लैंग्वेज में बोलेंगे तो a single covalent bond will always be a sigma bond, right? A double covalent bond will have one sigma and one pi, and a triple covalent bond will have one sigma and two pi bond. That means in a covalent bond, sigma bond will always be present, right? Pi could come in double and triple, जो मैंने इधर लिखा हुआ है. This is like single covalent bond every time, but not in like, and this one is present in double and triple like that. So the easiest question from this concept is like in MCQs again, and examiner could give you a structure or a molecule and say how many sigma pi bonds are present in this compound, right? So अब H2 में this bond that I see in terms of sigma and pi, this bond is sigma bond, right? और अगर मैं C2H4 ethene को देखता हूँ, तो all the bonds which are like single bond, they are sigma bonds, right? तो सिग्मा, और डबल बॉन्ड में one sigma and one pi. So if I'm supposed to number sigma pi, so it will be 5 sigma and 1 pi in this compound. ये MCQs की example है, तो टेबल बना हुआ है sigma pi columns है, you have to pick the right option. तो easiest फॉर्म में तो इस तरह क्वेश्चन आता है। तो बाकी इसकी जो ड्राइंग वगैरह है वो नेक्स्ट मैं आपको उसकी एग्जांपल भी कराता हूँ, एटलीस्ट एक आधा भी हम कर लेते हैं।
Now, like orbital diagram, जब आपको क्वेश्चन में किसी कंपाउंड की ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को आ जाए तो इट वुड मीन कि यू हैव टू मेक सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स फॉर दैट. लाइक डॉट क्रॉस वो चीज है, ऑर्बिटल डायग्राम इज दिस. इसके लिए व्हाट यू विल डू इज फर्स्ट यू शुड नो कि इसमें इन टर्म्स ऑफ सिग्मा पाई अगेन व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड इज इट हैज हैविंग. तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, राइट? सो वी मस्ट हैव वन ऑफ दीज थ्री ओवरलैप्स इन इट. ये जो ऊपर लिखी हुई है, हाँ, इन तीन में से कोई एक होगी. ठीक है, नॉट द साइड वाइज ओवरलैप. तो उसको कैसे डिसाइड आप करेंगे, उसको मैं आपको आइडिया देता हूँ. देखें, हाइड्रोजन प्रोटॉन नंबर इज 1, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1. क्लोरीन्स प्रोटॉन नंबर इज 17, तो इट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. ये अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया इसके लिए होना चाहिए आपको. तो क्लोरीन का वैलेंस सबशेल इज 3p5. इसको समझे बेटा? गलत हो गया, मुझे पता था तुम यही गलती पकड़ सकते हो. आप कहोगे पहला डब्बा क्यों नहीं भरा? That doesn't matter. All these three of same energy, you can actually start filling from that side even. जी. And actually you could label this as px. ये pz बना दो, py बना दो, फिक्स तो नहीं है. ये तो हम px, py, pz ऐसे लिखते हैं, फिल भी इधर से, नो फिक्स रूल्स. और ये मैंने px को एम्प्टी रखा है फॉर आवर कन्वीनियंस, आसानी के लिए. अगर मैं इसको py, pz पे बनाऊं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने p फिक्स नहीं किया. ठीक है, वहां मैंने p को फिक्स किया हुआ है. तो अगर आपने p ऑर्बिटल को लाना है लीनियर ओवरलैप के लिए, तो इट कुड बी एनी p विद एनी s. आई मीन s की तो शेप ही एक होती है, लेकिन p कहीं कोई भी हो सकता है, x एक्सिस वाला, y वाला, z वाला. बट इजी क्या है कि x एक्सिस पे रखें उसको. अब आप देखें क्लोरीन के केस में px इज हाफ फिल्ड, तो with one electron, तो this will come for bonding. हाइड्रोजन के पास तो है ही 1s1. So what would happen in this case is कि hydrogen will bring its s subshell for bonding, and chlorine will bring its p subshell, px, chlorine का. So they have one electron each, right? So once they come close, they overlap, and this overlap would be a linear overlap of s and p type, right? अगर HCl की orbital diagram आती है तो this would be the answer where we show orbitals involved in bonding, but we don't draw the entire orbitals of a big atom. We just draw the one which is involved in bonding only. तो इस तरह से आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे. थोड़ा सा मैंने इसको तेज एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड पे आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी. And the argument to the electron. No, it won't come for bonding then. I mean, if it has two electrons, it can't bond again. सिर्फ वो आएगा बॉन्डिंग में, the one which is half filled, so it should be px, py, pz. अगर py पे एग्जाम्पल कह देता है py पे बनाओ, तो आप py एक्सिस पे बना लो इस तरह का, and bring hydrogen from the top maybe. बताने के लिए ये कि आप x एक्सिस पे रखें, ठीक है. इसको भी इसमें बड़ी एग्जांपल्स नहीं आती, केम्ब्रिज वाले इसी भागते हैं इस टॉपिक से. हाइब्रिडाइजेशन से भी बहुत भागते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में आई बहुत लेट. तो लेकिन स्टिल अब इसकी ऐसे एग्जांपल्स कर देंगे कि जो आज हम